वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की मार्केट अपडेट हो जाए। टुडे इज 25th ऑफ मई। सो आज की मार्केट के बारे में बात करते हैं। TCS एंड Infosys dragged down the market yesterday. HDFC Twin supported. कोटक बैंक की जो सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। कोटक बैंक इज लुकिंग बुलिश एंड स्ट्रांग। फॉरेन मार्केट की अगर बात की जाए तो Nasdaq is down by 2.35%, whereas Dow Jones is up little bit by 0.15%. FII sold yesterday in Indian market, that is around 2,393 crores. Domestic investors ने buy किया है 1,948 crores की. BSE Sensex PE, it's looking at 22.03%. Nifty 50 PE is at 19.87, below 20. Bank Nifty PE is at good level, 17.19%. Brent crude is at 113.76. India GSEC जो है वो 7.35 में है. Rupee is at 77.58 against per dollar. Dollar index is at 101.76, below 102, which is looking good. कि जो डॉलर है आप अगर वर्ल्ड में जो भी करेंसीज है उसके अगेंस्ट अगर देखें तो वो वीक हो रही हैं. सो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपसे बात करना चाहते हैं, बट सारे चीज़ों को एलेबोरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इट विल बी अ टाइम टेकिंग थिंग. सो क्वाड 4 नेशंस के बारे में अगर हम बोले, जो मीटिंग चल रही है, क्वाड 4 नेशन हैज़ done one agreement that they will extend around $50 billion infra assistance in Indo-Pacific region, because to hopefully counter China, the association has been made. They will also assist debt-ridden economies like Sri Lanka. The situation is in Sri Lanka because the dependency create on China, जो चाइना ने डिपेंडेंसी अपने में क्रिएट करवाई थी, और सडनली दे आर अपॉर्चुनिस्टिकली मूव्ड आउट. उन्होंने अपने हाथ खींच लिए और श्रीलंका आज इस पोजीशन में है. Export grown by 21% in May 2022 from 23.7 billion dollar. Export happened in first 21 days of May 2022 के मैं आपको ये 21 days के report बता रहा हूँ. This month is looking good exports point of view. Majority of exports are petroleum product, electronic goods and engineering. These are the major segments. India allowed duty-free import 20 lakh ton per year of crude, soybean and sunflower oil, permit given because domestically prices of this product increasing, and to control the prices, India is doing import while production is low, and to control the demand, government is doing this thing. So ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी थी कंपनियों के लिए, जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए, कि अपनी अर्निंग्स को बढ़ा पाएँ. बट अभी गवर्नमेंट के लिए मेन फोकस इज इन्फ्लेशन, कि वो नंबर्स ना बढ़े. तो इसीलिए गवर्नमेंट की जो जो ज़रूरत है वो गवर्नमेंट ज़रूर करेंगी. 10 million ton export cap on sugar has imposed by government because they wants to control the prices. अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर भी द शुगर एक्सपोर्ट जो हुई थी दैट वाज अराउंड 10 million ton. तो वही लेवल रखा गया है. इसमें घबराने की कोई चीज़ नहीं है कि हम अगर हमारी प्रोडक्शन हो रही है तो वी कांट मेक द प्रॉफिट. कॉर्पोरेट्स के लिए लॉस है. वो चीज़ ना हो कि जो सेम लास्ट ईयर की जो एक्सपोर्ट हुई थी उसी लेवल को रखी गई है. नाउ गवर्नमेंट फोकस ऑन इन्फ्लेशन numbers, so they are not bothered about the company's earnings. That's why they are doing these things. Public sector bank is going to give 8,000 crore in जो dividend to the central bank in FY22 की जो है. This is happening in last ये लास्ट 5 सालों में नहीं हुआ था. Though the NPS numbers are going down, जो provisioning है वो काफ़ी कम हो रही है. So that's why the profitability is going up. So RBI retail district plans total investment is around 96 crore rupees. The expectation was high, but that's not up to the mark. जो expectation थी वो काफ़ी ज़्यादा थी retail investment से, but वो नहीं हो पाई है. That's because of the lack of the awareness probably. But अगर जिससे yield 7.5 to 8% तक रहती है, hopefully the demand will go up and it will look attractive. Grasim Industries has increased the plan for capital expenditure in paints business from 5,000 to 10,000 crore की.
yesterday टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टॉक्स फॉलन इन Nasdaq, तो उसके कारण से जो आपकी Nasdaq है वो उसमें डाउनसाइड 2.35% की देखी गई है। US 10 years GSEC yield fallen from 2.84% to 2.76%. In past few days, we have seen the demand of GSEC has increased. That's why the yield fallen. So American GSEC की जो डिमांड है वो काफ़ी बड़ी है, उसी कारण से yield जो है वो नीचे आई है। सो ये लगभग 3.12% जा चुकी थी, बट नाउ फॉलन ड्यू टू दी डिमांड। India's 10-year GSEC is at 7.36, as I said already. Not very change. Wait for coming days कि किस तरह से रेट हाइक्स होते हैं या किस तरह से RBI जो भी अपने प्लानिंग्स जो हैं वो करते हैं। India's market cap to GDP is at 107%. कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं सोचा कि जस्ट रीड आउट करूं, वो आपके लिए अच्छा होगा कि नहीं तो ये काफ़ी समय ले लेगा ये जो वीडियो है। सेबी लेज डाउन ऑपरेटिंग नॉर्म्स फॉर डेट इंडेक्स फंड्स एंड ETF. सेबी हैज रिलीज न्यू नॉर्म्स फॉर पैसिवली मैनेज डेट फंड्स. Debt ETF index funds could be based on indices comprising of corporate debt, securities or GSEC, T-bills or SDL state development loans or combination of all. The India may go for more duty cuts against runaway inflation. The government is considering some more short to medium term measures that can dampen inflation further after cutting excise duty last week to bring down prices of petrol and diesel. Said people with knowledge of matter. Work generation under the Mahatma Gandhi National, ये एक बार आप ध्यान कीजिएगा, वर्क जनरेशन अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम फेल शार्पली इन अप्रैल, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को देखा जा रहा है वो रूरल एरियाज से अर्बन की तरफ मूव कर रहे हैं, so suggesting improvement in urban labor market and thus a deep in demand for work under the rural employment guarantee scheme. India's economic growth may have slowed to 3.5% in Q4 of FY22 from 5.4% in the previous 3-month period due to impact of higher commodity prices on margins, decline in wheat yields and on higher base. Ye ICRA said on Monday. Prolonged high temperature are credit negative for India, as that could exacerbate inflation and hard growth. So Moody's Investors Service wrote in a note on Monday. India's fiscal deficit may overshoot to 6.9% of the GDP this fiscal year after Finance Minister Nirmala Sitharaman ji ने announced various subsidies such as fuel tax cuts weak to lower the inflation. So that Barclays ने ये कहा है. RBI sets up 6 members committee headed by former Deputy Governor Mr. BP Konango to review customer service standards in entities regular by it. The increase in export taxes on iron ore announced by the Indian government over the weekend will lead to large surpluses at home and mainly hit producers of low-grade ores that depends on overseas market, a mining industry body said on Monday. Steel product prices, which were continuously rising in the domestic market, are expected to fall by 10 to 15% due to duty-related measures taken by the government. The Department of Consumer Affairs has taken a strict note of restaurants levying service charges of that against the practice. वो जो सर्विस अभी कुछ दिन पहले एक सर्विस चार्ज के ऊपर जो रेस्टोरेंट ने है सर्विस चार्ज लगाई थी एक जन के ऊपर, तो उसके अगेंस्ट पे ये चीज़ें बनी हैं. सो द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैज़ टेकन अ स्ट्रिक्ट नोट. सो ये सारे पॉइंट्स काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने जस्ट रीड आउट की है. मुझे लगा कि ये चीज़ आपको बताना सही है. काफ़ी बार हम उसको लेकर डिस्कस नहीं कर सकते हैं बिकॉज नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है. तो और बातों को आगे नहीं बढ़ाते. अगर आपको हमारे कंटेंट्स वगैरह हैं वो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा.
थैंक यू।